Shah, under whose aegis we have actually curated this beautiful series in which all of you can, take part, increase your knowledge, upskill, and be part of the CFE initiatives. So I welcome each one of you, and you can always give a pat on your back because you've really invested time, effort, and energy in your own upskilling. I wish you all the best, and I'm sure you're going to take a lot of takeaways from this session. Thank you so much for joining in, and I would now request our chairman, Shri Asiji Shah, for his address. Asiji, over to you. Thank you, Maniji. Am I audible? Yes, you are. Okay. So, a warm welcome to every participant for today's Guruvaar Ka Gyaan series. This series we curated specifically for everyone from all over India, all over international, to gain skills, to gain the right knowledge, to get that thing that can make them even more successful. So, when we talk about body language, when we talk about creating impressions, when we talk about meeting someone for the first time, uh, that time is extremely important because it sets the tone of the conversation or the engagement or the meeting. Also, if you're there for a business deal or for any negotiation or anything that you are looking to get output from, your body language, your persona makes a huge difference. So today we have Neelu Ji, who is the expert in this. Welcome, Neelu Ji. Welcome to Guruvaar Ka Gyaan. Welcome to GKG CFE. We're very happy to have you. And we're looking for a very engaging session. And the session will be followed by open Q&A. So I request every participant to hold your questions till the end, and we will have a specific moderated Q&A. But wishing all of you, all the participants, I hope you get what you're looking for. I hope you get the right skill. We're calling this a skill because this is actually a skill that everyone should have and implement in their daily lives. So once again, warm welcome everyone, and back to you, Maniji. Thank you, Thank you, Ashitji, for the theme address. Body language is very important, as you rightly said. We first need to be aware of our own body language, and we also need to observe and interpret others' body language so that we know what they're thinking, what they're feeling. So today's session on body language to influence and lead is conducted by Ms. Neelu Jain. She is a postgraduate in HR and NLP practitioner and a certified business storyteller. She brings 17 plus years of corporate training experience. She is an ex-Wiproite and is the founder director of Chrysalis Training and Consultancy LLP. She has trained 3 lakh plus employees and is a certified facilitation skills and certified voice coach. She's a pranic healer too. She's completed the CXO level program from XLRI Jamshedpur, awarded with Indian Achievers Award for the emerging company for Chrysalis, the most inspiring Indian award 2021 by IESE CCI, the Excellence Award 2021 by HR Success Talks, the Diversity and Award the Awareness Leader by WOHA London. She has facilitated many training programs across industries in the private and PSU sectors. So without much delay, I would invite the speaker for our session today, Ms. Neelu Jain. Over to you, Neelu. Thank you so much. Thanks a lot, Shashiji. And to the rest of you all, thank you so much for joining in. To the entire community here, thank you for the warm introduction as well as setting the tone and setting context. तो आप सबके लिए एक quick check है. Can we switch between a Hindi and an English? Is that okay? Give me a yes in the chat if that is okay. जो मैं जिनको देख पा रही हूँ, I can see them. But what about the others? Okay, great. So definitely a lot of yeses coming on the way. Thanks a lot. जैसे कि हमने सुना, it's more of an upskilling session. So the entire thing that we'll plan is
कहाँ से आपको अगर कुछ भी इसमें से कैन यू फाइंड समथिंग रिलेटेबल, कि आप इसमें से कुछ ले जा सकते हो जो आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो. दैट इज द कॉन्टेक्स्ट, उसी से हम ये सेशन की शुरुआत करेंगे. एंड आई नो ये वर्चुअल सेशन है, एंड जब हम एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं या फिर वर्चुअली कनेक्टेड होते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है दैट योर प्रायोरिटीज विल टेक ओवर. बट ट्राई एंड बी हियर एज मच एज यू कैन. बी विथ मी on chat, be with me whenever you would like to unmute and share something. But to start with, आपने मेरे बारे में सुना. I don't know much about you. So let's do this. Let's quickly try and understand what kind of professions do we belong to. Are we business owners? Are we entrepreneurs? Are we students, etc.? So आप अगर अपने बस profession को chat box में अगर डाल देंगे, let me just see. कहाँ से हम, what all? Okay, great. So I can see business owner, student, chartered accountants, internal auditor, businessman. Okay, real estate, CXO role, startup. I can see optician, interesting, student, professional. Okay, professional बहुत बड़ा gamut है, but I'm guessing some profession, some job. Okay, CA stockbroker, business owner, CEO, coach, business export, retailer. Wow, businesswoman. Okay. Amazing. Naturopath. Okay. IT expert. Super. So I think we are all here from diverse backgrounds, diverse perspectives, and हमें body language unite करती है because this is something that is a common across, and this will be required for all of us for sure. So I am certain कि next 1 घंटा हमारा बहुत ही engaging रहने वाला है, and I'm hoping there'll be a lot of things जो आप समझ पाए, सीख पाए, as well as अपने आप internalize कर पाए और देख पाए कि आप अपने जगह पे given the profession that you're in, आप क्या और differently कर सकते हैं. So that will be the mindset. हम यहीं से शुरुआत करेंगे. If you're ready, give me a yes in the chat box. Are we all ready? And मैं आपको ऐसे परेशान करने वाली हूँ. There'll be a lot of things that I'll keep asking you to do in the chat. Okay, super. Thank you so much. So yes, like everybody introduced, हमारा session का नाम ही है Influential Body Language, and the tagline that we gave was Command Respect and Inspire Trust. And मेरी introduction already सबने की है, and I'm glad to know all of you from different perspectives, different phases of life. So पहला सवाल आप सबके लिए ये है कि does body language impact your presence? हमने शुरुआत की जब हमने introduction में सुना that क्या होता है कि impression gets set. So my question to all of you is कि आपको लगता है body language presence को impact करता है? अगर आपको लगता है yes, then type in body language. इस बार yes से काम नहीं चलेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. Type in body language if you think, okay. All right, yes, certainly. So body language does create an influence. ये हम सब मानते हैं, ये हम सब जानते हैं. All right. Great, thank you so much. What we are going to talk about next, आपका 1 घंटा कैसे दिखने वाला है? We are going to talk about how do you understand and read body language? Because आप day in day out जब लोगों से मिलते हो, चाहे वो virtual setup हो, or if you're meeting people in person or online, like I said, virtual setup. When you look at people, what are certain signs, signals that आपको समझ में आएगा कि सामने वाला की बातें और उनकी body language sync में है कि नहीं? That is one. Second is, how can you be more aware of your signals when you are talking? क्या आप even aware हैं कि आप कैसे बात कर रहे हैं? एक aspect होता है हमारा communication के words, दूसरा होता है हम जिस हिसाब से उसको present कर रहे हैं. So that is something we'll also look at. And the third one that we'll deep dive into is how do you actually build your body language that can lead and influence? These are the 3 parts that we'll look at. But सबसे पहले एक क्विक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. आई एम गेसिंग बहुत लोगों को यहाँ गाड़ी या कोई सॉर्ट ऑफ व्हीकल जरूर चलानी आती होगी. तो अगर आपको अपना पहला दिन याद है, द फर्स्ट डे व्हेन यू एक्चुअली स्टार्टेड ड्राइविंग, वर यू सुपर सक्सेसफुल? डिड यू एक्चुअली नो सब कुछ कि कैसे ड्राइव करना है, क्या करना है? आई एम गेसिंग द आंसर वुड बी अ नो. ग्रेजुअली वो करते करते स्किल सेट बिल्ड हुआ. So let me stop sharing and take you back to the time जब आपने पहली बार कुछ मे बी एक गाड़ी या फिर एक बाइक या कुछ चलाया होगा. सबसे पहले जब हम गाड़ी को देखते हैं, when we didn't know, maybe 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago, जब आपने पहली बार गाड़ी देखी होगी तो आपको बस ये पता होगा क्लच होता है, ब्रेक होता है, गियर है, गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी चलती है. That's all you know initially. आपको इससे ज्यादा और कुछ पता नहीं होगा.
और धीरे धीरे जब आप ड्राइविंग स्कूल में या आपको कोई सिखाता है, देन यू गेट टू नो, ओके, इफ आई प्रेस दिस देन दिस हैपेंस, इस गियर में यहाँ तक जा सकती है गाड़ी, उसके बाद मुझे ये चेंज करनी है। धीरे धीरे क्या हुआ, आपकी कॉन्शियसनेस डेवलप होने लगी जब लोगों ने आपको समझाना शुरू किया, व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग अवेयर। बट आपको वो भी स्टेज याद होगा वेर यू न्यू कंप्लीटली हाउ द कार फंक्शंस, यू नो द क्लच, यू नो द ब्रेक, यू नो द गियर, बट यू आर वेरी कॉन्शियस। अगर आपको याद है, जब आप पहली बार गाड़ी लेकर रास्ते में निकले होंगे, कोई अगर बात भी कर रहा होगा बैकग्राउंड में, आप बोलते होंगे कि डोंट टॉक, चुप रहो, डिस्टर्ब मत करो, मुझे फोकस करने दो। सो ऑल ऑफ यू समवेयर हैव एक्सपीरियंस दैट। या फिर अगर कोई कहता होगा गाना चेंज कर दो, म्यूजिक ऑन कर दो, तो हमारा सारा फोकस रहता होगा गाड़ी पे, एंड वी वुड बी लाइक ओके डोंट डिस्टर्ब मी राइट नाउ। अगर कोई और व्हीकल बहुत पास आ जाती है, सो ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल। बट टुडेज डेट, अगर आप बहुत सालों से ड्राइव कर रहे हैं, तो आप रियलाइज करेंगे, आप गाड़ी में बैठे, अपनी गाड़ी ऑन की, सब आप चल भी दिए एंड पहुंच भी गए, एंड आप रियलाइज भी नहीं करते हैं, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट विथ योर कॉन्शियसनेस, विथ योर कंप्लीट एक्टिव पार्टिसिपेशन। इट्स बिकम एट द बैक ऑफ योर हैंड। आपकी वो मेमोरी में कहीं ना कहीं एम्बेड हो गई है, वो फिट हो गया है, वो आप ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है एक हैबिट क्रिएशन, एक हैबिट फॉर्मेशन का प्रोसेस, जिसको हम अगेन मैं कुछ कुछ मॉडल्स का इस्तेमाल करूंगे इसमें, मॉडल इन द सेंस सम फ्रेमवर्क, लेकिन उसका पूरा पर्सपेक्टिव ये है कि आप कुछ चीजें इंटरनलाइज कर पाए, कुछ चीजें समझ पाए। तो मैंने जो आपको गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, इफ यू नोटिस इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। जब आपको पता नहीं था कि गाड़ी में होता क्या है, अनकॉन्शियस, इनकॉम्पिटेंट, पता भी नहीं है, अनअवेयर है, अनकॉन्शियस इन द सेंस अनअवेयर, एंड इनकॉम्पिटेंट इन द सेंस एबिलिटी नहीं है, पता नहीं है क्या करना है। हर चीज की शुरुआत वहीं से होती है, जब हम अनकॉन्शियस होते हैं एंड हम अनअवेयर होते हैं। धीरे धीरे जब ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं या कोई हमें समझाता है, देन वी बिकम कॉन्शियस, ओके दिस इज द ब्रेक, दिस इज द क्लच, दिस इज द गियर, बट यू आर स्टिल इनकॉम्पिटेंट, आपको पता नहीं है ये नॉलेज को यूज कैसे करनी है। Then comes the next stage where you're learning, where you're developing. तब आप consciously वो चीजों को apply कर रहे हैं. This is your stage of conscious competence. यहाँ पे आप धीरे धीरे अपनी habit mastery की तरफ जा रहे हैं. And then finally comes the stage जहाँ पे ये back of the hand, ये एक आपकी it becomes like second to you. It comes naturally to you. ऐसी बहुत सारी habits हैं जो आपने धीरे धीरे master की है. And this is called the learning ladder, कोई इसको 4 stages of competence कहता है. This helps us in mastery. Now, why I'm telling this to you is because जैसे हम कुछ अच्छे habits इस stage में develop करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम करते करते इतने master हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं होता हम कर रहे हैं. When we are operating from this stage, there are a lot of, when we are operating from this stage, there are a lot of habits that we are doing. And we've done it so well. ये आपकी conditioning है. You've done it so well कि आपको realize भी नहीं होता है कि आप इस stage से operate कर रहे हैं. जब हमें feedback मिलता है, जब हमें कोई लोग कहते हैं, अरे तुम ऐसे कर रहे हो, तुम वैसे कर रहे हो, तुम ऐसे बैठे हो, हमें realize भी नहीं होता है because we are not consciously doing it. So this is the stage that needs awareness. क्योंकि हम unconscious हैं, हम unaware हैं, but हम competent हैं, हम इतने अच्छे से इसको कर रहे हैं कि हमें realize भी नहीं हो रहा है हम कर रहे हैं. तो इस वजह से जब लोग हमें फीडबैक देते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हाउ इज इट दैट दे आर गिविंग अस फीडबैक, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर व्हेन वी आर डूइंग इट. सो आपको क्या लगता है मैं ये आपको बॉडी लैंग्वेज के सेशन में क्यों बता रही हूँ? एनीबॉडी हु वुड लाइक टू शेयर दिस? आई जस्ट टेक अ पॉज, बिकॉज ये हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर वी मूव अहेड. इसका बॉडी लैंग्वेज के साथ क्या वास्ता या लिंक? एनीबॉडी? डू वी अलाउ पीपल टू अनम्यूट इन बिटवीन और चैट इज फाइन? Chat? Okay, sure. Chat. Yeah, all right. So, क्या लगता है? I know it's a long question for you to type, but फिर भी, let's see. Okay, Advait says English, please. What is the question? The question is that why am I sharing this model with you? Why am I letting you know about the personal mastery or learning mastery and all the leadership laddie? To understand the initials, okay, our body language is by default, okay, before habit. Interesting. To form the habit, yes, because there are a lot of things that we have been doing day in, day out that has become our habit, that's become second to us, that's become a part of our system. With respect to our body language, Apurva was saying, we are also unaware about conduct. Super, very nice. You all are already skilled. We don't need upskilling session. Aapko pata hai, definitely. Lovely.
Varsha is saying our mind controls our action. Yes. Tanmay is saying to get roadmap. HJ is saying to understand basic structure of human psychology. Padmaji is saying it should come naturally. Yes. So the point is that yes, it should come naturally, but a lot of things we learn that is working for us and we continue doing it and keep it building like a habit. A lot of things we need to unlearn, which is not helping us. But वो awareness के साथ ही हो पाता है. So here comes the next thing for all of us. अगर हम इस स्टेज में हैं जहां हम अनकॉन्शियस हैं बट हम इतने अच्छे हैं उसमें कि हमें पता भी नहीं चल रहा है that we are doing it, the first and the foremost thing that we should do is become aware. How do I look? How do I sound? How do I stand? How do I speak? When I'm presenting, अगर आप CEO हैं, अगर आप कुछ business meets के लिए जा रहे हैं, deals के लिए जा रहे हैं, आप किस तरह से बैठे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं, आप कहाँ बैठे हैं, क्या आप eye contact make कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो आपका first awareness stage है. How are you presenting yourself? Because जो मैंने आपसे पहला question पूछा था, does body language impact? You all told me a yes. And the yes is only when you're able to be aware कि मेरी body language सामने वाले को influence कैसे कर रही है. And उसके लिए हम डिटेल में भी जाएंगे कि क्या influence करता है. What in the body language influences. But the first thing is to be aware अपनी body language and सामने वाले की. And it's just not about body language. आज हम body language की बात कर रहे हैं. But this is valid across for any sort of change, any sort of habit rebuilding. You need to be first aware. Then comes your acceptance कि ठीक है मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करती हूँ. This is one of the areas of improvement. This is what I need to work on. Then comes your acceptance, and then finally comes your action. Just this is not good enough. Just by accepting कि हाँ I am like this, there can be two things. One, you get too conditioned with मैं ऐसी हूँ और कुछ नहीं कर सकते. Take it or leave it. Another is no, I need to change myself because I want to grow. That is where you can move to action. Action तब तक नहीं आएगा जब तक हम ये वाली stage, awareness definitely, and acceptance वाली stage पार नहीं करते. So, question that I had asked you in the beginning was क्या body language influence कर सकती है? आपने मुझे हाँ बोला था. Now I have another question for you. That is, imagine आप एक discussion में बैठे हैं. And one party says a yes, but जो आप अपने पास picture देख पा रहे हैं, वैसे maybe कोई एक discussion चल रहा है. Let's say if you're a chartered accountant, you're talking about accounts and you're talking about maybe the new GST rules क्या क्या आए हैं. You're talking about maybe personal investments, and the person says हाँ ठीक है देखते हैं करेंगे. Cross arms, looking away, not making eye contact. Would you believe the communication? आपको लगता है वो investment करेंगे या नहीं करेंगे? अगर आप CEO हैं, आप business कुछ deal के लिए जा रहे हैं, and आप बात कर रहे हैं, maybe you've met let's say a government organization, आप अपने products के बारे में, अपने services के बारे में बात कर रहे हैं, and सामने वाला कहता है हाँ देखेंगे. आपको हाँ कहता है, but arms are crossed, the person leans backwards and avoids eye contact. You think it's a yes, an actual yes or a no? Give me the answer in the chat. Okay, no. That's what I keep hearing. All right, in the chat. Interesting, yes. But mind you, the words are saying it's a yes. So, शब्दों में तो yes कहा जा रहा है, but definitely in the body language, the whole body language is communicating a no. So what will you believe more? You're believing the body language more instead of the non-verbal communication. You're believing the non-verbal communication instead of the words here. And that is what happens. बहुत बार क्या होता है जब हम business meetings में होते हैं या फिर as an employee हम काम कर रहे हैं जब, we are not even observant of our body language. इसलिए यहाँ पे आपके सामने कुछ unconscious body language है. जब हम खड़े होते हैं, there are a lot of tiptoes that people do. पैर खड़े हैं लेकिन ऊपर नीचे, heel पे, एड़ी पे tiptoe movement करते हैं खड़े रहकर. A lot of people are shifty, swinging, shifting in the chair. I'm sure इसमें से कुछ ना कुछ आपने खुद notice किया होगा अपने बारे में या फिर आपने दूसरे को देखा होगा for sure. There are some people who keep playing with a pen. Maybe किसी को इतने खेलने की आदत होती है कि वो पेन भी टूट जाता है कभी-कभी. So, playing with a pen, playing with jewelry, playing with hair, completely all over the place, right? A lot of times this happens. When we are standing, there's hand in the pocket, there's hand in the waist, there's hands on the back. All of these, या फिर खड़े रहकर weight on one leg, not balancing.
कुछ लोगों की ये भी आदत होती है, बात करते करते या तो आई या फिर नोज या फिर फेस टच करेंगे या आंखें रब करेंगे. एंड दिस इज क्लासिक. अ लॉट ऑफ पीपल टॉक विद देयर आईज क्लोज्ड बिकॉज वो इतना सोच में शायद व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, दैट दे क्लोज देयर आईज एंड दे आर टॉकिंग टू द पीपल. When you see any of these body language signals, when you see people do this, do you create an opinion or an impression about people? And is it positive? Is it negative? Give me positive, P or N in the chat. Any of these signals. Right, I see a lot of N's coming in. So definitely there's a lot of negative body language that you see. Yes, and इसका impression भी हमारे पर negative पड़ता है. And जैसे हम बात कर रहे थे that you know in our communication बहुत सारी चीजें, even when आप अगर business deal के लिए जा रहे हैं, as an employee अगर जा रहे हैं, कोई आपको ना भी कहता है, शब्दों में हाँ कह रहा है, the body language is communicating a no, you will assume it's a no. And यही शशि जी ने शुरुआत की थी with that principle of Albert Mehrabian, जहाँ पे उन्होंने बोला था almost 93% is cause of you know non-verbal paraverbal communication. So there was a research that was done by a professor called Dr. Albert Mehrabian, जिन्होंने ये figure out किया था, ये bring forward किया था to people that जब audio visual की बात आती है, जब हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, body language almost 55% of message communicate करता है, tone 38% and words सिर्फ 7%. इसीलिए अगर आपको कोई क्रॉस आर्म करके पीछे लीन करके बोले हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आप बॉडी लैंग्वेज पे विश्वास करेंगे because you can see the person. Now this is valid for audio visuals. But अगर वहीं written communication है तो आपका सारा ध्यान words पे जाता है. अगर oral है तो आपका ध्यान tone पे भी जाता है. But when it's a face-to-face communication or an audio visual, जैसे अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, you're able to see how I'm using my hands, you're able to see my eye contact with all of you. So वो ध्यान उस पे जाता है, and that is what makes that 55% of body language communication. तो अभी आप मुझे ये बताओ, when you look at this image, overall, what is coming to your mind? What is happening? अगर आपके सामने ये लोग बैठे हैं, imagine you're an employee, you're a CA, you're a CEO. Yeah, absolutely. Yes, so this lazy, this boring, this sleepy, lazy vibes, inactive, bored. बिल्कुल, बिल्कुल. I hope आप सिर्फ picture को reference कर रहे हैं, definitely. Yes, so that is what is happening. And if you look at the other one, इसमें आपको क्या अंतर लग रहा है? जो दूसरी फोटो मैंने आपको दिखाई है. Thinking, okay? Activeness, excitement, attentive, okay? Interesting communication, discussion, focused, okay? Okay, great, yes. So there's a striking difference between the two. अब हम इनको नहीं जानते हैं, ना आप इनको जानते हैं, ना मैं इनको जानती हूँ. These are just pictures. But you see how these pictures are communicating. ये सिर्फ photographs हैं, but ये इतना communication कर रहे हैं because we just spoke about it. जब audio visual होता है, जब आप देख पा रहे हैं, तो naturally सारा ध्यान हमारा body language के ऊपर ही जाता है. अगर ये वाली जो चार जन की audience है, even if they say yeah, very interesting session, हम believe नहीं करेंगे because their body language kept communicating it was not interesting. So this is what we are arriving at, that body language बहुत सारे signals को communicate करता है. And यहाँ पे आप देखेंगे किसी का हाथ ऊपर है, किसी का हाथ ऐसे है. But the other image, they are making straight eye contact. They are using hand gestures. So यही कुछ चीजें हैं जिसके लिए हम थोड़ा ध्यान रखेंगे. यही सारी चीजें हम practice भी करेंगे in a short while as I give you the tips and techniques. Another very important thing that I want to share with you is हमारी जो फिजियोलॉजी होती है, जैसे हमारे बॉडी का मूवमेंट होता है, वो हमारी साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं. फिजियोलॉजी इम्पैक्ट्स आवर साइकोलॉजी फॉर श्योर. देयर वाज अ ब्यूटीफुल वीडियो ऑफ समबडी कॉल्ड एनी कडी. मैं बाद में आपको लिंक शेयर कर सकती हूँ या फिर मे बी आई कैन पुट इट इन द चैट. अगर आपके पास कभी टाइम हुआ तो जरूर वॉच इट बिकॉज दिस इज अ वीडियो विच एनी कडी ने अपनी एक वीडियो में कहा था दैट बॉडी लैंग्वेज influences how you're feeling.
आपने ये नोटिस किया होगा, बचपन में आपको बोला जाता होगा कि उठ के बैठ के पढ़ाई करो, या अगर आपके बच्चे हैं आप उनको बोलते होंगे कि सही सीधे सीधे बैठ के पढ़ाई करो। क्यों कहते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप सीधे बैठते हैं तो इट स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग योर होल बॉडी। मे बी लेजी फील हो रहा है, उल्टा है, लेजी फील होता है, हम स्लाउच करने लग जाते हैं। तो क्या होता है, वी स्टार्ट फीलिंग मोर अनहैप्पी और मोर लेजी और मोर एनर्जीलेस। बट हमें बोला जाता था कि सीधा बैठो, बिकॉज व्हेन यू चेंज योर फिजियोलॉजी आपकी साइकोलॉजी पे भी इफेक्ट हो जाता है। इसलिए आप नोटिस करेंगे दैट मोस्टली व्हेन पीपल आर विनिंग, जब लोग जीत रहे हैं, जब वो रेसिंग लाइन, लेट्स से अगर कोई दौड़ रहा है, मे बी यूसेन बोल्ट और एनीबडी दैट यू लुक अप टू, एनी एथलीट, anyone from any profession, जब वो जीतते हैं वो अपनी full body is open and the celebration is like that, there's an openness. और जब कोई हार जाता है या फिर कोई हारा हुआ फील करता है, we try and close our body because it has an impact. The physiology affects your psychology. So आमी करी ने अपने वीडियो में कहा था कि हम उल्टा भी कर सकते हैं, हम अपने ब्रेन को रीवायर भी कर सकते हैं। जब आपको लग रहा है स्मॉल, when you're feeling like powerless, instead of sitting like this, instead of trying to hold yourself together, why don't you try power poses? And वहीं से the whole concept of power posing came in कि हम क्या अपनी साइकोलॉजी को बॉडी लैंग्वेज से चेंज करते हुए क्या हम अपनी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट कर सकते हैं? क्या हम ऐसे कुछ पावर पोजेस में रह सकते हैं जो हमारे बॉडी में जो भी हार्मोनल चेंजेस ला सकते हैं, जस्ट बाय वर्किंग ऑन आवर फिजियोलॉजी, जस्ट बाय चेंजिंग हाउ वी आर सिटिंग, हाउ वी आर वॉकिंग, हाउ वी आर लुकिंग। एंड इट वाज अ स्टडी व्हिच वाज प्रूवन टू बी ट्रू। सो ये दोनों का इंटरलिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सो द नेक्स्ट टाइम यू आर फीलिंग डाउन, आप देखिएगा, आप अपने आप को ऑब्जर्व करिएगा, आप स्मॉल फील करने लगते हैं, उल्टा अपने बॉडी लैंग्वेज को एक्सपैंड करिए। कुछ पावर पोजेस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे फॉर श्योर, बट राइट नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेट द बेस फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इन सबका कनेक्शन कैसे है, द फिजियोलॉजी एंड द साइकोलॉजी। टेल मी, व्हाट डू यू सी इन दिस इमेज? दो पॉलिटिशियंस हैं डेफिनेटली, बट आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैंने ये इमेज फ्लैश किया, अभी मैं स्टॉप करूंगी शेयर करना। आपने इमेज में क्या देखा? Okay, let's see. Two relaxed leaders. सही से देखा कि नहीं देखा? Okay, casual talk. Okay, discussion is going on. Interesting. Relaxation. One is explaining. Okay, interesting. Person on the left seems more attentive. Stages of socializing. Guy holding a quote. Mirror in action. Okay, Shilpa ji says it. Walking, talking. While walking, talking. Okay. Guards are lower. Interesting, very interesting. Okay, so let me share this back with you. And जिन्होंने कहा कि walking, talking, etc. Let's just see. I'll put this back for you to see it. Yes. किसी को अपना आंसर चेंज करना है? Is it just about walking? Do you see anything significant? क्या ये सिर्फ walking है in the park, in the garden, two political leaders? Okay. Obama is explaining, thinking seriously. We get the same response as well. One is attentive, other is clueless. Okay. अच्छा, confidence जी। अब मैं थोड़ा एक स्पेसिफिक सवाल पूछती हूँ, क्या आपको दोनों की बॉडी लैंग्वेज में कुछ कॉमन दिख रहा है? Is there anything common in both of their body language or their overall presence? Clothing, height is same, hanging coats, blazer. Okay, they're mirroring each other. Interesting. Looking down, quotes removed. Okay. One is active, another is passive. There's no eye contact. They are different. All right. So the reason why I put across this picture for you and the reason why you're seeing this, आप कुछ लोगों ने definitely a point किया है, आप देखेंगे, one, they are definitely engrossed in communication because ये आपको उनकी body language से समझ में आ रहा है.
ऑडियो विजुअल नहीं है, सिर्फ विजुअल है, and you're able to understand कि कुछ communication चल रहा है. Both of them are open because they're not closed, उनके quotes removed हैं, which means they are having some sort of an open discussion. So that is communicating for sure. अब आप देखेंगे दोनों का एक स्टाइल है, दोनों ने कोट पकड़ा हुआ है कि एक ने अपने लेफ्ट में और दोनों ने, हाँ, एक ने लेफ्ट में एक ने राइट में. You will see both of them have their coats on top of their shoulders. Now, we don't know if this was a coincidental image or if this was actually followed, because Obama ke liye, the world says it that he's a very powerful communicator. He's also an NLP practitioner. This, what you see in front of you, is something called matching and mirroring. ये बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है. जब हम चाहते हैं कि लोग हमसे इन्फ्लुएंस हो, when we want people to get influenced with what we are saying and how we are saying, and हमारी बातों में एक इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाए ताकि वो हमें और अच्छे से सुने, we can start matching their body language and mirroring their body language. जो जैसे वो कर रहे हैं वैसा अगर हम शुरू कर दें करना, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, साइकोलॉजिकली the person starts feeling that we are in sync with each other. Discussions better हो जाते हैं, influence better हो जाता है. Obama has had his hand in the pocket. He's confident in what he says. Discussion after meeting is over. Okay. Interesting perspectives, right? So the point that I'm trying to communicate to you, everybody, is that when we are talking, when we are actively talking to people, अगर कोई बैठे, for example, कोई sideways अगर होकर बैठे हैं और हमसे बात कर रहे हैं, when you also sit sideways, when you turn to that person sideways and you match the person's body language and you start mirroring it, influential communication starts happening. That's the impact of physiology and psychology. जब आप अपने सामने वाले के हिसाब से उसकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर करना शुरू कर देते हैं, तो इन्फ्लुएंस क्रिएट होने लग जाता है. बट डोंट मेक इट सो ऑब्वियस दैट द पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग अनकंफर्टेबल. मुझे याद है एक बार somebody had a habit of scratching his head like this. So जब जब थोड़ी थोड़ी देर बाद वो ऐसे ऐसे करके स्क्रैच करते थे अपना हेड, तो सामने वाले को पता था उनको मैच एंड मिरर करना है, तो उन्होंने भी करना शुरू कर दिया. So धीरे धीरे the person started realizing, and एक बार के बाद वो consciousness आ गई, उसके बाद उन्होंने stop कर दिया. तो जब आप incorrect body language को mirror और match करते हैं, it becomes a rapport killer instead of a rapport builder. तो आपको पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को मिरर करना है. अगर वो आई कांटेक्ट मेक कर रहे हैं तो आप भी मेक करिए. अगर वो थोड़ा सा साइडवेज टिल्ट होकर बात कर रहे हैं तो आप भी करिए. If somebody is doing a handshake with you, you do it. If somebody is probably using a pen while talking to you, आप भी वो करिए. These are छोटी छोटी चीजें, पॉजिटिव इंडिकेटर्स जो आप मैच एंड मिरर कर सकते हैं to create that influence. बट नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हेड स्क्रैच कर रहा है, फेस स्क्रैच कर रहा है, या कोई हिलते डुलते बात कर रहा है, तो अगर आप वो करने लग जाते हैं, इट हैज एन इंस्टेंट rapport killer. It breaks that rapport. So this was about your matching and mirroring. Now I have a few questions for you. अब बहुत सारी चीजें हैं बॉडी लैंग्वेज में. पोस्चर हो सकती है, जेस्चर हो सकते हैं. Let's try and understand all of this one by one. Posture is how you sit. Your hands and your gestures are how you use your arms, your facial expressions, your eyes, and your legs and your feet. All of this constitutes your entire body language. अब अगर किसी को आप देखते हैं, posture is upright, shoulders are open. ऐसे stooped नहीं है, slouched नहीं है. अगर shoulders open है and upright है, what's the cue? What's the message that this body language is giving you? अगर आप किसी के शोल्डर्स अपराइट देखते हैं, ओपन शोल्डर्स देखते हैं, इंस्टेड ऑफ द रेस्ट ऑफ इट स्लाउच मतलब ऐसे झुके हुए, राउंडेड शोल्डर्स झुके हुए. व्हाट्स द क्यू दैट यू गेट? कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल, यस, रिलैक्स्ड. ओके, सुपर, बिल्कुल. जब हम लीन फॉरवर्ड करते हैं कॉन्वर्सेशन में, ऐसे नहीं, मे बी आप किसी से बात करें, आप कुछ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप किसी से मिलने गए हुए हैं, मे बी आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, या फिर यू एज अ बॉस यू आर टॉकिंग टू एन एम्प्लॉय, एंड बात करते करते सामने वाला आपके सामने आता है, थोड़ा सा अपनी चेयर पे फॉरवर्ड बेंड होता है वर्सेस पीछे बेंड हो जाता है, लीनिंग बैक. व्हाट इज दैट पोस्चर गिविंग यू अ मैसेज एज? वो उनका शिफ्ट इन पोस्चर आपके लिए क्या मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. लीनिंग बैक, लीनिंग फॉरवर्ड.
What is the message? Showing interest, okay. Confidently relaxed, okay. Relaxation, interesting. So आप notice करेंगे जब आप बात कर रहे हैं and somebody leans forward, naturally your natural inclination is because you're trying to listen to the person more carefully. Your interest has developed. Leaning forward is an indication कि लोग आपको सुनना चाह रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या बातें हो रही हैं. And leaning backward is a sign of either disconnect, not being in sync, not interested, etc. Now, these are microseconds के micro expressions. These can, even your facial expressions are micro expressions. ये बहुत कम time के लिए आपको दिखेंगे, but if you're aware, you'll be able to pick them up very quickly. अगर बात करते करते कोई backward slouch हो गया है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो आपकी बातों से सहमत नहीं है. It can be with regard to pricing, it can be with regard to what you're saying, it can be the person's not convinced with the approach. It's a good time to stop and ask the person, what do you think? Because your body language is giving them, their body language is giving you a lot of signals. So आपको signal interpret हो गए हैं, stop, pause, ask. So that you're able to change your communication. Because ultimately, आप अपनी body language पे क्यों काम कर रहे हैं? आपको influence create करना है. ये जान के मैं क्या करूं कि shoulders drop हैं कि back हैं कि कोई सामने आया है कि कोई पीछे आया है. मुझे influence create करना है. So when I know that somebody is losing interest in what I'm saying, ask, get them back. This is how your body language will help you to influence. Hand gestures. Open palms facing upwards or clench fist and clench hands. जब हम clench कर लेते हैं, जब हम दिखाते नहीं हैं, या फिर जब हम बात कर रहे हैं तो हम अपने hand gestures को use कर रहे हैं, open palms को use कर रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में difference क्या है? What do you think? Open, when you're using your hand gestures, open gestures, versus clenched, when you don't want to use your hands at all, when you're putting them together. What's the difference? Okay, open, extrovert, ठीक है, interesting. Hand gestures, confident, बिल्कुल, बिल्कुल. Open, flexible, yes. अब देखिए, पता हमें सब कुछ है, जानते हम सब हैं, लेकिन बात यही है कि हम कितना अवेयर हैं, हम कितना उसको कर पा रहे हैं. हमें पता अगर कोई हैंड जेस्चर्स यूज कर रहा है, इसका मतलब द पर्सन इज ट्राइंग टू बी अ कॉन्फिडेंट स्पीकर, द पर्सनस यूजिंग द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस. जानते हैं, लेकिन अब हमें, अगर हम करते हैं एंड वी डू इट वेरी वेल, सुपर. इफ वी आर नॉट डूइंग इट, वी नीड टू स्टार्ट डूइंग इट. एक्सेसिव हैंड मूवमेंट. कुछ लोगों की ये भी प्रॉब्लम होती है, जब वो बात करते हैं, अनअवेयर होते हैं, too much of hand movement करने लग जाते हैं, the entire focus goes on the hand movement instead of looking at them. A lot of times it is nervous energy which comes out in our physiology. It's nervous energy that comes out in our body language. Let's talk about crossed arms. आप बात कर रहे हैं, ये हमने एग्जाम्पल में भी यूज किया था, आप बात कर रहे हैं कोई क्रॉस आर्म करे. What does that communicate? Okay, egoist. Listening patiently. Basanji, program should be for 2 hours. Thank you. I'm hoping you're finding it of value. Pankaji keh rahe hain, arrogant, close ideas, non-perspective, scanning your words. Interesting. Yes, yes. A lot of times, crossed arms is associated with defense. जब आप attacked feel करते हैं, तो naturally आप अपने आप को defend करने की कोशिश करेंगे. It can also be a body language of disagreement. आप agree नहीं करते हैं, तो आप crossed arm करते हैं as a sign of disagreement. Now, ये भी तो हो सकता है, ये मेरी habit है, मुझे comfortable लगता है crossed arms और crossed legs में बैठना. It is possible, right? It's my habit. I like it. But सामने वाले को ये नहीं पता है. सामने वाले को ये नहीं पता है कि क्या ये आपकी habit है या क्या आप सच में disagree कर रहे हैं. Because this indicates a very negative body language. इसलिए awareness is the first step. Be aware that in a business meeting, in a important discussion, am I doing this? And agar, let's say शुरुआत से, if I was not seated like this, I was seated with my arms open, but as I start talking to the person in my communication, I do like this. In my communication, my arms go closed. It's a good enough indication for you to understand
that सामने वाला आपकी बात से सहमत नहीं है, या फिर सामने वाला अपने आप को अटैक्ड फील कर रहा है, तो वो डिफेंस में जा रहा है. It's a good indicator for you to again seek opinions, ask or change the course of how you're talking. अपने words को, body language को, tone को change करें. And with matching and mirroring, you can also help the person change his posture. अगर वो सामने वाला ऐसे closed arm कर रहे हैं, आप अगर थोड़ी देर के लिए closed arm करेंगे तो आप उनको mirror कर रहे हैं. उसके बाद you can remove your closed arm. थोड़ी देर बाद आप notice करेंगे वो भी अपने closed arms को हटा देंगे. So through your body language, you can also match and mirror and cut the negative body language. But ये level 5 है. सबसे पहले we need to get our basics right. Facial expressions. When you have a smile, you know कौन सी genuine smile है, कौन सी fake smile है, ये आपको पता चल जाता है. It's important for us to make that, have that smile. A genuine smile is when you're smiling with your, जब थोड़े से wrinkles आते हैं आंखों के पास, that's when you're smiling properly. Eyes. Making eye contact. बहुत बार क्या होता है, people look away. बात करते करते इधर उधर देखते हैं या फिर उसके तरफ ही देखते हैं जिसको जानते हैं. Or maybe looking up, looking down, looking away, etc. When people are not looking at you when talking, or people are rubbing their eye, face, nose, etc. when they are talking, आपके दिमाग में क्या impression आता है? Yes, Sonal ji, possible. अगर लोगों के पास medical reason है, it's possible. Like I said, कि कोई भी reason हो सकता है, लेकिन सामने वाले को शायद नहीं पता होगा कि वो reason क्या है. It's possible, definitely. Yeah, so I'm just back to my question. जब लोग हमसे बात कर रहे हैं, they're looking away, they're not looking at our eyes and talking. Maybe looking down, looking here, looking there and talking. हम क्या impression create करते हैं? What comes to our mind? Not interested in my talk, not attentive, no interest. Yes, बिल्कुल. बहुत बार ऐसे होता है, I'm sure आपने भी किया होगा. When somebody is talking to you, जब आप किसी को बहुत interesting अपनी कोई कहानी बता रहे हैं, and the person is looking away, and हाँ, and you're like, अरे सुनो तो सही, just listen to me. And the person's like, अरे सुन तो रहा हूँ. But how are we not convinced that the person is listening? Because eye contact make नहीं हो रहा है. And the person ends up saying, no, my ears are functioning, but your eyes are validating. Till the time you don't look or make eye contact, the person on the other end starts thinking that you are not interested, you're hiding information, you're looking away, you're not wanting to be in the conversation, etc. बहुत बार क्या होता है, हम सोचने के लिए भी, so again a different concept altogether, but our eye movements happen when we are even thinking. Some part of it जब हम construct कर रहे होते हैं, some part of it जब हम सोच रहे होते हैं, लेकिन if you do it too often, if you don't make eye contact when you're talking to the person, we can lose that person. हम कहीं ना कहीं वो जो रहो है, वो spoil कर देंगे. And even in the way we are standing, cross legs, cross tightly, जब हम cross arms, cross legs, it's the same thing, we are closed. So it's important to have open arms and open legs when we are talking. But it's very important कि आपके shoulder level के gap के beyond आपके पैरों का gap नहीं होना चाहिए when you're sitting. It looks very disrespectful, especially for a different gender. So it's important कि जब हम बैठे हैं, हमारे legs ज़्यादा wide open ना हो, and feet are flat, firmly placed on the ground. बहुत बार हम chair पे भी गोल गोल घूमने लग जाते हैं. These are also negative body language that communicates a lot of negative indicators. So I'll just take a pause. And I'll try and understand from you, what is the topmost negative body language that you have observed in others? आप बहुत सारे discussions का part होते होंगे, आप day in day out लोगों से बात करते हैं. कुछ एक ऐसा striking सा, oh my God, yawning while talking. हमने benchmark काफी high set कर दिया है. Yawning while talking, okay, looking here and there, not interested. वर्षा जी ने कहा स्टोरी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये आपने लिसनिंग वाली स्टोरी पे कहा होगा जरूर. ओके, समटाइम्स वी फील व्हेन वी हियर समथिंग रेपिटेटिव. हाँ बिल्कुल. नॉट लिसनिंग, अब्सॉर्बिंग, क्रॉस्ड आर्म्स, लैक ऑफ आई कांटेक्ट, शेकिंग लेग्स, बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं, प्रोटेक्टिव क्लोज हैंड्स, मिसिंग आई कांटेक्ट, फिजिटिंग विद मोबाइल, फिजिटिंग, लुकिंग हियर एंड देयर. एग्जैक्टली. अब आप सोचिए, अगर ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज हो रही है तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया, the person is not interested in the conversation.
या फिर ये भी हो सकता है कि ये उनकी हैबिट बन चुकी है, उनको रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि वो ये कर रहे हैं. It's a good time to pause and get him or her into a conversation and ask, अच्छा आपको क्या लगता है, आपका इसके बारे में क्या कहना है. तो क्या होगा, वो मोमेंटम को आप ब्रेक कर पाएंगे. बहुत बार क्या होता है, हम जब देखते हैं कोई अपने मोबाइल के साथ खेल रहा है, वी ऑल्सो टेक अ बैक सीट कि अरे इसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है. You don't create influence then. You create influence when you stop, you pause, and you take action. Yeah, hand in hair. ऐसे we are also guilty of it. Our gender is quite guilty of that. But there are a lot of men also जो करते रहते हैं अपने hands को comb की तरह use, dropping things while talking. Okay. What if we try to mirror our interviewer? You can, but the interviewer should not have attended this class. So you can definitely do it. Interviewer को अगर knowledge है तो it can become a challenge, but yeah, to some extent, don't overdo it. There was this very nice movie, I can't remember, I think Namak Halal थी या Namak Haram थी, Shashi Kapoor and Amitabh Bachchan gives clues. I'm talking about पुराना जमाना. शशि कपूर को clues मिलते हैं. शशि कपूर is the boss. अमिताभ बच्चन clues देते हैं कि देखिए हमारे बॉस को जो जैसा वो करें वैसा ही आप करना. तो शशि कपूर एंटर करते हैं, सारे बिजनेस एसोसिएट्स एंटर करते हैं, वो कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, नमक हलाल. ओके, सबको गुड मॉर्निंग कहते हैं. अब वो उठते हैं, वो इफ ही कफ्स एवरीबॉडी स्टार्ट्स कफिंग, इफ ही स्नीजेस एवरीबॉडी स्नीजेस. तो इतने एक्सटेंड तक भी मैच एंड मिरर नहीं करना है. बट या we definitely match and mirror positive body language, not to make somebody uncomfortable, because our goal is to build rapport. Our goal is to not make people uncomfortable. So yes, all right. तो ये है अब तक की अंडरस्टैंडिंग हमारी, that one we understood that बहुत सारी चीजें हम करते करते it becomes a part of our second nature. It becomes a part of our habit that we don't even know we are doing it. So what do? We become aware. Awareness कैसे build कर सकते हैं? या तो हम feedback ले, अपने आप को देखें, या फिर अपने वीडियोस को वॉच करें, या फिर हम समझने की कोशिश करें कि मेरी बिजनेस डील इनके साथ क्यों नहीं होती है, मेरी इनके साथ कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रही है. ट्राई एंड बी अवेयर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. सो अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, एक्शन, दैट्स द फर्स्ट थिंग वी स्पोक अबाउट. कि वो हैबिट को आपको अवेयरनेस में लाना है और उसके बाद उसके ऊपर एक्ट करना है. Second thing that we spoke about was that your body language communicates more meaning that you know than you know. 55% आपकी body language communicate कर रही है. इसलिए अगर कोई क्लोज आर्म करके पीछे लीन करके आपको हाँ भी बोले तो आपको पता है वो ना है, वो टेम्परेरी आपको हाँ कह रहा है. All the moms probably also know, right? We end up as mothers, you all say a lot of things and बच्चों को अभी समझाने के लिए, बुझाने के लिए हो जाता है, बट बच्चों को समझ में आ जाता है ये हमें कुछ नहीं मिलने वाला है. So body language communicates a lot, definitely. So words, tone, and body language have to be in sync. वरना body language वो meaning communicate करता है. The third thing that we spoke about was the fact that हमारे कुछ negative body language gestures हैं. For example, आंखें रब करना वगैरह वगैरह, ये जो हमने सारी list देखी, fidgeting with the pen, ये सारी चीजें एक negative communication करता है. You may be doing it, you may be seeing people do it. When you are doing it, you be aware, you stop. But इतना आसान नहीं है stop करना. आप replace करना शुरू कर सकते हैं. जैसे for example, मुझे समझ में आ गया, अच्छा पेन के साथ fidget नहीं करना है. Next time awareness build हो गई, समझ में आ गया acceptance कि मुझे पेन के साथ fidget नहीं करना है. कैसे stop करूं? आदत है, पेन उठाया, fidget करना शुरू कर दिया. What do I do? What you need to do is probably consciously start changing your habit. रिप्लेसिंग हैबिट. सो वो जो पेन उठाया है, नोट्स लेना शुरू कर दीजिए, या फिर पेन लेकर ही मत जाइए. ट्राई करिए कि पेन को साइड करके रखिए, बिकॉज आप हैबिट भूल नहीं सकते हैं. यू कैंट फॉरगेट समथिंग, यू कैन रिप्लेस इट. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फाइंड आउट रिप्लेसमेंट्स. जैसे हमारे एक ट्रेनर थे मेनी ईयर्स अगो, ही हैड अ हैबिट, व्हेनेवर ही वुड टॉक ही वुड यूज हिज हैंड्स, ऐसे करके अपने आप को ऐसे करते रहते थे, वो पैट करते थे खुद ही. एंड उनको नहीं पता था. अब इतने सालों से कर रहे हैं, उनको रियलाइज भी नहीं हो रहा है. एज स्टूडेंट्स, एज प्रोफेशनल्स, हम उनको देखते थे एंड हम काउंट करते थे कितनी बार किया, वो जो हम सब करते हैं स्कूल कॉलेज लाइफ में. अब दिस केप्ट हैपनिंग. ही डिडंट नो, ही वुड ओनली सी अस लाफिंग एंड स्माइलिंग. ही थॉट ही इज अ ग्रेट फैसिलिटेटर.
बट धीरे धीरे जब रिकॉर्डिंग्स मिली हमें अपने आप की, दैट इज व्हेन ही सॉ हिमसेल्फ एंड ही रियलाइज वो कितनी बार ऐसे कर रहे हैं. तो अब उनको समझ में आ गया था, अवेयरनेस बिल्ड हो गई, एक्सेप्टेंस बिल्ड हो गया. अब इट वाज टाइम फॉर एक्शन. नेक्स्ट टाइम से उन्होंने क्या करना शुरू किया, हाथ को ऐसे करना शुरू किया. He started using his hands differently. He started holding a marker and a pen in his hand. He started using duster in his hand because जब duster लगेगा तो पता चलेगा अच्छा ये नहीं करना है. So that was bringing in that consciousness. It didn't finish in one day. धीरे धीरे over a period of time with practice, he was able to overcome it. So the point that I'm trying to communicate to you is through this session, awareness will get built. This won't help you solve problems. This will help you identify it. ये अच्छा मुझे ये नहीं करना है, अच्छा सामने वाला ये कर रहा है, अच्छा ये फेस को बार बार टच कर करके बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, लाई कर रहा है, या मे बी आंखें रब कर रहा है, इधर उधर देख रहा है. It helps you recognize. Two, you need to, जब आपको recognition आ गया, अगर सामने वाला कर रहा है तो आपको उसको ब्रेक करना है influence create करने के लिए. अगर आप कर रहे हैं तो आपको रिप्लेसमेंट ढूंढने हैं कि इसको मैं स्टॉप कैसे करूं. What else can I do? Can I change my habit? So these are the two things that you need to be aware of. So कुछ tips हैं जो मैं आपके साथ share करूंगी, and then we will hand it over for Q&A in a short while. So the first few things that you need to remember, जब भी आप बात करें, consciously make eye contact with people. Maybe you're not, maybe कभी-कभी it becomes difficult for us to look into the person's eye. Try as much as you can. There's this triangle जिसको हम कहते हैं, in the center, आंखों के नीचे. अगर आप डायरेक्टली आंख में नहीं देख सकते, start with the triangle. Once you start building confidence, then धीरे धीरे you'll be able to build eye contact with people. Smile. Get invested in the conversation. Smile करिए when you're talking to people. But remember, just smile बोला तो हमेशा smile नहीं. You need to be sure of when to smile, when not to smile. इस बार business deal नहीं मिल रही, अरे वाह. No. So you know when to smile, when not to smile. So that is important. The third thing is to head nod. When you're listening to somebody, when you're engrossed in the conversation, आप head nod करते हैं तो आप सामने वाले को बताते हैं that you are interested in the person's conversation. So eye contact, smile, head nod. These are very important. Couple of more tips. जब आप खड़े हैं या बैठे हैं, try and use the steeple position. हाथ का क्या करूं, पेन लेकर फिजिट होने लग जाता है. कभी कभी हम फिंगर्स को ऐसे बैंग करने लग जाते हैं टेबल के ऊपर. All of this is nervous energy that comes out. Instead, get into this position. These are power poses. This is called the steeple position. So lowered steeple, raised steeple, lowered steeple. जो आप सामने की दो पिक्चर्स को देख रहे हैं. Steeple position में जाइए, उसके बाद अपने hand gestures use करना शुरू करिए. If you can't do steeple position, at least start with this. अगर आपको प्रॉब्लम है कि आप कुछ ना कुछ पकड़ लेते हैं हाथ में, or you start using your hands too fast, try and first get your hands in control. It's okay to start with this, then move on to your steeple position. ये सब practice के साथ आएगा. First day, you'll not be able to master it. You will feel uncomfortable कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रही हूँ. धीरे धीरे, it will become second nature to you, like your driving skills. What else to do? Use your hands as you're talking. अपने हाथ को use करिए. It creates more influence instead of not using your hands when you're talking. अब खड़े जब हम हैं, हाथों का क्या करें? What do we do with our hands when we are standing? So I have a few images for you. Let me label them as 1, 2, 3, 4, and 5. Tell me which one is okay. जब आप खड़े हैं, किसी की बातें सुन रहे हैं, इन पांचों images में से, okay, interesting. 5, 5, everybody is telling me. अब देखिए, सामने वाले का उत्तर गलत भी हो सकता है, तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सोच समझ के जवाब देना है. There are multiple, this body language is communicating a lot of things. Multiple images are communicating a lot. So hands behind, at the back, आपको याद होगा. Maybe the professors or people, or sometimes we are in charge when we have the hands behind ourselves, or sometimes when we are taking orders, our hands are behind ourselves. अगर आप number 2 देखेंगे, वो अपने आप को पकड़ रहे हैं, feeling small.
Number 3 is too much arrogance. हाँ बताओ क्या बोलना चाहते हो? Hands on the yeah. And the 4th one, if you see, hands in the pocket. Again, slight sign of arrogance. The 5th one, if you notice, it's about taking orders. It's about अपने आप को फिर से झुकाना. So none of these body language are appropriate or power poses. इनमें से कोई भी नहीं है. तो जिसने अपने ऊपर वाले का मैसेज देखकर नंबर 5 डाला था, वो आंसर भी गलत है. पूजा जी ने, अपेत जी ने बोला none. योगेश जी ने बोला था none of the above. And I'm sorry, I haven't been able to scroll through all the chat, but I'm sure बहुत लोगों ने ये spot किया होगा that none of this body language is correct. Absolutely. तो अगर ये correct है ही नहीं, तो क्या करें? We can do something like this. These are certain poses, these are certain hand movements. जब आप खड़े हैं तो आप ये कर सकते हैं. Again, steeple position में रह सकते हैं. कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो hands on the side रखिए. And नहीं तो फिर थोड़ा सा अपने हाथ को आप clasp कर सकते हैं एक साथ. But too much मत करिए because that also indicates closed posture or gesture. So this is something that you can focus on. And I will leave you with top 5 body language tips जो across the world most influential communicators use करते हैं. And here is the first one. The first one is lead with a strong and an open posture. जैसे हमने बात की, shoulders open, hands on the side instead of crossed, because आपके posture बहुत सारी signal दे रहे हैं. People read before you speak. So you stand up straight, you sit upright with shoulders relaxed and open, slouch mat kariye, lean too far back mat kariye, keep your chest open because ye positive way mein signal karega. So the first thing that you need to remember is whenever you're sitting and you're standing, stand with your arms open instead of arms closed, instead of holding yourself like that, and sit with your back upright. बहुत बार हम शुरुआत करते हैं वैसे, धीरे 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 हम सिंक इन हो जाते हैं. कोई बात नहीं, जैसे याद आए, गेन योर पोस्चर बैक, रीगेन. ये हम सबके साथ होता है. The second tip that I want to share with you is to make eye contact. Eye contact, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले भी कहा था, it builds trust, it shows authority, but don't do too much of eye contact, otherwise it will start making people feel intimidated. 60-70% conversation के बीच में चलेगा. When you're speaking in groups, look across everybody instead of just focusing on one person, because that person might feel uncomfortable. So that's about your eye contact. Gestures, आप अपने hand gestures use करिए. हमने steeple position की बात की, हमने ये steeple position की बात की, हमने open arm gestures, open hand gestures की बात की. Use your hand gestures to communicate, because that will show that you're clearly communicating. How do I start using? You can do this steeple. You can also use gestures in quantity, like small, medium, large. जब आप बात कर रहे हैं, आप small, medium, large ऐसे वाले gesture भी use कर सकते हैं, just to explain. सामने की तरफ एक हाथ को constant रख के दूसरे हाथ से explain कर सकते हैं, दूसरे हाथ को constant रख के पहले वाले हाथ से explain कर सकते हैं, वापस अपने fingers को ऐसे ला सकते हैं. These are small tips that you can use. अब आप notice करोगे, the moment I'm saying these are small, so I'm making my fingers like this. These are small tips that you can use. ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप practice करेंगे तो automatically it will start happening for you. Facial expressions, बहुत बार हमारे facial expressions, micro expressions बहुत कुछ give away कर देते हैं. जब सामने वाला कुछ ऐसी बात कह रहा है जिससे हम सहमत नहीं है, when somebody is giving us a deal that we don't like, our facial expression communicates a lot. So whenever you feel you're under defense, whenever you feel somebody saying something that you're not in agreement with, control your facial expressions, because that is giving out a lot. Sometimes when somebody is going on talking, especially जितने भी हम working professionals हैं, जब हमारे bosses बात करते रहते हैं, या सामने घर में ऐसी opportunity है जब सामने वाला बोलते जा रहा है, even before you say something, your facial expressions tells them that you're not interested, because either you will be frowning, eyes को twitch करते हैं, या फिर इधर उधर देखने लग जाते हैं. So be aware of your facial expressions and manage your presence before your high-stake meetings.
आपको याद रखना है कि आपकी प्रेजेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज को इम्पैक्ट करती है, बट आपका प्रेपरेशन भी इम्पैक्ट करेगा. जब तक आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट द बेस्ट मोमेंट. इसलिए अपनी पिच को प्रैक्टिस करिए, स्टैंड स्टॉल, डीप ब्रीथली, अपनी पिच को रेडी रखिए. So before I close, like I told you, physiology affects psychology. So there is something called power poses. अगर आपको याद होगा, Superman, Batman, all these superheroes, they all get into some sort of a power pose. वैसे ही Wonder Woman वाला एक power pose है, hands on the hip. So that helps you to regain power. जब भी आप पावरलेस फील करें, जब भी आपको लग रहा है that you're feeling too small, you're feeling energyless, drained out, get into some power pose. Some power poses are also like opening your arms like this, like athletes. वैसे भी अगर आप 1 मिनट के लिए भी खड़े रहते हैं, तो अगेन ये सारे पावर पोजेस पब्लिकली नहीं करने हैं. This should be done in private, just letting you know. Next meeting में हमें ऐसे नहीं करना है unless there is some celebration की बात. But yeah, these power posing in the washroom, in your one-on-one space, as soon as you get up, wherever it's possible, get into that power pose and you will be able to regain your power. So या तो वो hands on the hip करके आप 1 मिनट के लिए खड़े रहिए, या फिर आप हाथ को ऊपर करिए. The whole thing is, जब आप low feel करें, अगर आप इसको practice करते हैं, because you're changing your physiology, your psychology will start getting affected. So that's the impact that you will definitely have. And remember, your body language is communicating a lot. Make eye contact, smile, use hand gestures. जब सामने वाला आपको negative signals दे रहा है, you know क्या करना है. Question करिए, बात करिए, कुछ ऐसी बातें बोलिए, हो सकता है जिससे agreement आ जाए. उनकी negative body language को थोड़ी देर के लिए अगर आप mirror कर रहे हैं, तो आप उससे बाहर भी निकल सकते हैं. Matching and mirroring से आपको rapport build करने में आसानी होगी. So yeah, I'll just take a pause at this, and if there is anything you'd like to ask, or maybe formally hand over, Shashi ji ko hand over karna hai agar mujhe, to should I hand it over to you? Yeah. Yeah, we will take the Before- questions Sure. now. But before So- handing over, I will just say that everybody, thank you so much, because you all have been a fantastic audience. Before I hand over for Q&A, I just want to know आपकी top of the mind recall. अभी जो 1 घंटा आपने मुझे सुना, इससे आपको कोई एक चीज क्या समझ में आई? Any one thing? Okay, please explain. Point 5, sure. I'll go back to that. Can work on the habit and update, can have physical presentation, show confidence, rewire habits. Amazing. Proper body language, sound is not clear. Okay. I'm hoping it's not for everybody. Cover of No, the it's absolutely fine. okay, Maybe their network issue. sure. Cover of the book is as much as important as the content. Wonderfully said. Good session. Thank you so much. Importance of body language, power posing. You're an example. Oh my God. Thank you so much, Uday ji. Lovely to hear this. Most challenging one is to control. Yes, facial expressions. अगर हम सभी control कर लेते तो problem ही क्या थी? But it's just about building awareness. Mirroring. Okay, learn my mistakes. Great, great. I'm so glad. एक सवाल था. I'll just go back to this point. I'm guessing आपका यही था, point number 5, because ये last point था. इसके बारे में, what was I trying to communicate here is manage your presence before high stake meetings. जब भी आपको लगता है there is some very important critical meeting जिसमें आप जाने वाले हैं, be extra prepared. बहुत बार क्या होता है, we show up just like that without any preparation. वो सारी nervous energy हमारी body language में दिखनी शुरू हो जाती है, हमारी टोन में अफेक्ट होने लग जाती है. When we are not prepared, maybe we are stumbling, we are fumbling, we are हिचकिचाते हैं बात करने में. तो वो सारी चीजें हमारी फिजियोलॉजी को, मेंटली हमें पता हम प्रिपेयर्ड नहीं है, फिजियोलॉजी अफेक्ट होने लग जाती है, एंड इट शोज टू द सामने वाला दैट वी आर अंडर कॉन्फिडेंट. सो द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक फ्रॉम हियर इज दैट prepare in advance, prepare your speech, your pitch, your presentation, and prepare it along with your body language. जब आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप स्टैंड टॉल करिए, खड़े रहिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, ब्रीथ करिए,
but preparation is very important. And avoid करिए meeting में rushed होकर जाना, because जब तक आप mentally calm नहीं feel कर रहे हैं, you will not be able to do a good job in your important meetings. So you need to calm yourself down. And that is when we were talking about वो calmness अगर internally नहीं है, body language में दिखाई देगी. When you're feeling rushed, your body language will show that you're rushed. So either you do some self-talk, you tell yourself कि calm down, या फिर आप अपने आप को किसी posture में लेके आइए कि आप अपने आप को calm करिए, relaxed करिए अपना shoulder, ताकि physiology आपकी psychology को affect करे. या तो psychology physiology को करेगी या physiology psychology को करेगी. किसी एक को काम करना बहुत जरूरी है. That was the fifth one. I hope you understood what I meant. All right, great. So thank you so much to all the lovely dear audience. You've been really interactive. Thanks a lot. आपने मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, लंबे messages भी type किए, and it was lovely interacting with all of you. मैं ये formally शशि जी को hand over करती हूँ. Yes, please. Thank you, Neelu. That was really an amazing and a very thought-provoking also. And I think I also was introspecting and reflecting कि मैं क्या गलत करती हूँ, सही करती हूँ. So thanks for being there and sharing your learnings and experience. I would tell we have a Jito Gurukul channel, so YouTube channel. So whoever wants to see the recording again, because when we see it again, there are many points that we miss and we may recollect them. So Sachin, can you share the link for the Jito Gurukul YouTube channel of ours? And there's another announcement that whoever sends a video testimonial after this session, so we'll be floating a feedback form. If you send a testimonial, then you may also get featured on CFE social media. So please share your feedback. That's always important for us and also for the trainers. So Neelu, there's a question that how to handle, Udayji is asking, how to handle anxiety in high stake discussion. Sure, that's a brilliant question. How to handle anxiety. Okay. Now there are two parts to it. One is medically handling it, because a lot of times क्या होता है, there are acute amount of stress that has been in our system, जो कि कहीं ना कहीं ऐसे high stake environment में बाहर निकल आता है. तो पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है, is it my usual self or is it because I'm feeling temporarily under stress and anxiety इसलिए वो बाहर निकल रहा है. अगर ये मेरा normal self है, तो फिर I need some sort of a therapy, some sort of an advice, some sort of medically getting treated. If not, if it's only because that person's presence is making me threatened, or if let's say कुछ high stake है कि मैं lose नहीं कर सकती, जैसे ही आपकी body threat में feel करने लग जाती है, that is when your stress levels rises, your negative hormones starts getting secreted. ये तब होता है. तो आपको पहले समझना है, is it my usual self or is it because of the current situation? अगर ये current situation के वजह से हो रहा है, let's say मेरे पास एक बहुत important meeting है जो मैं I can't afford to lose it. My anxiety levels are very high. One is to control it in that moment, but the other one, which is more proactive, is to be so prepared that your psychology is with you. हम घबराते तब हैं जब हमें लगता है कि क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, सामने वाले ने क्या पूछ लिया. Why not go prepared with that? You know you're going to meet somebody very important. 4 चीजें discuss करनी है. Go prepared with it. You will be better able to manage yourself. So 1 is preparation. 2 is in the moment self-talk to yourself that this will be the best moment. सब अच्छा होगा. वॉशरूम में अगर आप जाते हैं उसके पहले तो just get into your power pose. Physiology अपनी change करिए. Your psychology will get affected. So before the moment, be prepared. In the moment, get into a steeple position. In the moment, make eye contact. In the moment, talk to yourself कि सब अच्छा जा रहा है. These are the things that you can do. And if it's a continuous problem, then it needs to be treated as well. We need to see how to overcome our stress, maybe through yoga, maybe through meditation. Uska source जानना बहुत जरूरी है. Mostly it is when our body feels under threat. That is why our anxiety levels also pile up.
Yeah, I hope that answered your question. Udayji, that was for you. So Sachin has also shared the feedback form link. So kindly click on that and do share your feedback. It's really valuable and important to us. Someone has asked that how to control laughter while giving a speech or entering a room where you are the center of attraction. So everybody's looking at you. How to control that laughter? Wow. Tanvi, I it mean, was. अगर हम इस स्टेज में हैं जहां हमें लाफ्टर हो रहा है, because normally people get into the stage fright. Normally what happens is people feel like, oh my god, everybody's looking at me, what do I do with it? Laughter है, then I'm guessing not over the top. If you're smiling, then great. बहुत बार क्या होता है, जब सामने वाले हमारे दोस्त होते हैं या फिर they're making us laugh, automatically we start laughing. I'm guessing आप उस स्टेज की बात कर रहे हैं जहाँ एक familiar audience है, बहुत ताली है, वो environment आपकी laughter को influence करता है. The only thing and the simplest thing is stop making eye contact for some time. Shift your mindset, divert your mindset into your work. Look at your presentation, look at your work. Talk to yourself that I am focusing on my work. आप believe नहीं करेंगे, when we can start doing that conversation with ourselves, बहुत सारी चीजें impact होती हैं. जैसे ही आप यहाँ पे set करेंगे, आपकी external body language change होने लग जाएगी. So I'm sure the ones हम स्कूल कॉलेज में भी हंसते ही थे कुछ ना कुछ चीजों पे, जब पता चलता था कि टीचर देख रही है तो ऑटोमेटिकली स्विच कर जाते थे. That was a switch that you used to do then. We can apply the same in professional life as well. So I just hope that answered your question. I know, डांट भी पड़ी है हंसने के लिए. टीचर डांट रही और हम हंस रहे हैं. बिल्कुल. एंड फिर हम रियलाइज करते थे, कुछ और सोचने शुरू कर देते थे या फिर देखते नहीं थे उन दोस्तों के सामने जो हमें हंसा रहे हैं. उस वक्त तो डर था टीचर का, अभी आपको सोचना होगा. तो या एज यू राइटली मेंशन कि साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरकनेक्टेड. सो वी हैव टू डू दैट, क्योंकि ज्यादा हंसा वो भी ओवर द टॉप एज यू राइटली सेड नहीं करना है. बिल्कुल बिल्कुल. Apurva is asking how to maintain the body language or facial expressions when things are not in our favor during a discussion and it is becoming uncomfortable. How to maintain the body language when things are not in our favor and it is becoming uncomfortable. I think that's a brilliant question, because body language will be a representation of अंदर क्या चल रहा है. जब भी कुछ ऐसा चीजें होती हैं which is not going in our favor, I think it's very important to again become aware that what is happening. Why am I feeling threatened? Is it not going as per my expectation? Is the person being rigid? Am I feeling attacked? हो क्या रहा है? एंड ये आप उस मोमेंट में नहीं कर पाएंगे. ये आपको एज अ बैकग्राउंड अपने आप को समझना होगा, बिकॉज आप अपने बिहेवियर का कुछ पैटर्न देखेंगे. यू विल नोटिस व्हेन पीपल डिसएग्री विथ यू, आपका एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर होगा एंड वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बाहर निकलता है. That maybe if let's say for example, if I take my example, let's say if somebody disagrees with me, the first thing that I might do is I might say, अरे तुमने भी तो ऐसे किया था. So naturally the body language becomes of accuse, pointing fingers, etc. There are some people when they feel threatened, they shut down, they stop talking, they withdraw, they walk out, बोल के चले जाते हैं. That's their mechanism of dealing with displeasure. That's their mechanism. Now, if you're in a professional context, अगर आप business context में हैं and आप बात कर रहे हैं, अब आप ये सब नहीं कर सकते, उठ के चले जाएंगे, या तुम्हारी टीम ने भी तो ये किया था, तुमने भी तो ये किया था, वो आप नहीं कर सकते. It's important to understand कि अभी the heat of the moment is rising. तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को काम करना है. तो या तो ड्रिंक सम वाटर, काम योरसेल्फ डाउन, या फिर आप थोड़ा सा शिफ्ट करिए, या फिर अगर कोई ब्रेक ले सकते हैं. ये बार बार नहीं कर सकते, एक बार एक इंसान के साथ ही कर सकते हैं. Maybe you can take a little break and say, okay, I'll just use the restroom and come back. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं that you can try and apply. Maybe drink water, या फिर ask the person, अच्छा मैं कहीं इधर उधर का सवाल, just to break that tension, वो भी कर सकते हैं. या फिर कभी कभी क्या होता है कि प्रीवियस चीज को रिपीट कर सकते हैं. अच्छा आपने ये बोला था अभी अभी, इसका क्या मतलब है? वेयर इज द पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट? ट्राई एंड क्वेश्चन. सो दैट विल हेल्प यू टू ब्रेक दैट टेंशन. बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज योर पैटर्न, बिकॉज आप नोटिस करोगे वही पैटर्न हर जगह रिपीट होता रहेगा. डिसएग्रीमेंट्स का एक आपका फेमिलियर पैटर्न हो, वो पैटर्न को अगर आप अंडरस्टैंड कर लोगे, यू विल बी एबल टू know that when does it happen,
because body language is just a representation of what you're feeling inside. I hope that gave you some insights. It has to start with awareness. And yeah, as trainers, we Thank you. always talk about, constructive feedback that yes, ye theek hai, but however, so agree to disagree is something that I think when we say that to our mind also, then we represent through our body language also. So I Absolutely. think, And yeah, thank you. and एक just सवाल है जो मैं one लास्ट लूंगी. Yes. हाँ, और एक छोटी सी चीज जो मैं बताने की कोशिश कर रही थी, दैट इज कि बॉडी लैंग्वेज को करेक्ट करना हमारा काम नहीं होना चाहिए. हमें ये देखना चाहिए दैट यू कैन डू एंड इट विल अफेक्ट योर साइकोलॉजी. यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ वो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज जब तक आप रूट कॉज को फिक्स नहीं करेंगे, आप अल्टीमेटली यू विल नॉट बी एबल टू फिक्स द प्रॉब्लम. यस प्लीज, शशि जी. Yeah, so right, because it may be my ego which is not ready to accept, or it may be, some anger, some grudge. So going to the root cause is very important, as you rightly said, because ultimately we can control ourselves and not the other person. Thank you. I think they were great answers. So someone is asking how to hold back tears in public. Okay, these are tricky ones. I think How this is to the hold. last one we will take. Sure. Very, very difficult. How to hold tears, very difficult, because tears come in when, again, some sort of an emotional feeling that happens. Either that feeling is kabhi they're happy tears, kabhi they're sad tears, depends on what are we experiencing internally. How do I hold it back? In the moment, it's very difficult. The only way to hold it back is to disassociate. कि जो वो बोल रहे हैं उस बातों को दिल पर नहीं लगाना. बट इसके लिए हमें अपने आप पे काम करने की बहुत जरूरत है. जब टीयर्स आ रहे हैं आप होल्ड नहीं कर पाएंगे. बट हाउ डू आई स्टॉप फीलिंग टीयरी व्हेन whatever has been said, I'm not taking it on myself. I'm just taking it as suna, feedback samjha, and go to trying to disassociate. I remember one of these people used to do it really well. जब भी उनको attacked feel होता था, whenever he would feel like somebody is being very rude or mean with a person, and he would get very bad feedback, he would just say, can you give me an example? Can you tell me ये आपने कब देखा? Can you help me understand the feedback? These were just 3 things he would ask. अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें पूछते थे. हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है whenever we hear some feedback or something critical जो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म्स में चले जाते हैं. We either question, we either shout, we say तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, how dare you say this to me. The conversation digresses. Instead, just asking, can you give me an example? Can you tell me when did I do it? Can you help me understand this? तो क्या होता है, whole conversation instead of attack and defense moves to trying to understand. And उसके वजह से we don't exhibit negative body language. So I think it's important to really channelize how to take feedback that we are not in agreement with. वो tears वगैरह बाद की स्टेप है. पहले समझना जरूरी है कि मुझे क्या बॉदर कर रहा है, क्यों बॉदर कर रहा है, उसको कैसे चैनलाइज करें. I hope that helped. No, a great answer that don't take things personally. And I love that कि can you help me understand. वहां आते ही वो ब्रेक हो जाता है कि भाई हम आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं. Can you help me understand? Lovely answers, and I also learned so much today. Thank you so much. Now, to convey the official vote of thanks, I would invite Narendra Ji Shamsukha, CFE Apex Vice Chairman, to say thanks to our speaker, to our audience, and all the dignitaries. Over to you, Narendra Ji. So before I communicate the formal vote of thanks, Neelu ji, may I ask a last question? जी सर. आपको ये अलाउड है. ये एन से जिनका नाम शुरू होता है वो इतने बढ़िया बॉडी लैंग्वेज, बढ़िया पावरफुल कम्युनिकेशन, मैंने एक आपको देखा है, एक नरेंद्र मोदी को देखा है, ये एन वाले और सब इतने एक नरेंद्र जी को भी शामसुखा जी. आपने देखा है. जी. So this was a really wonderful session. A lot of things, say we got reminded where the unconsciously, we do a lot of things which we are not supposed to, or so we could improve.
and definitely this is we are going to improve, and it's going to help all of us. So really a lot of thanks to Neelu ji for your time and such a powerful, meaningful, and conversational presentation, where the say the engagement was so high that everyone was putting their own question. भाई मेरी problem का solution दे, बाकी तो ठीक है, मेरे साथ ये लफड़ा है. So it was really nice, and thank you to the entire team of CFE, Asif ji, Bankim ji, Kushali ji, Mani ji, Monica ji, and Shashi ji, obviously, everyone. It was really, once again, thank you everyone. Very, very wonderful session, which is going to be helpful to all the people to improve their personal, professional life, relationship, business, and everything. Thank you. Thank you, Thank Narendra you ji. so Yes, I much. think this is relevant in all stages of life, in all walks of life. So now we will not take more questions. Sorry, you can again watch the video. We have shared the YouTube link, and you can also share the feedback. We have shared the feedback form also. So thank you, and we will now conclude with the national anthem. So I would request all of you to rise for the national anthem. Sachin. I think we can sing if it's not being played. Sachin, हम खुद ही बोल देते हैं. Okay. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you.